A very good morning to all of you. Morning, sir. I hope my voice is clearly audible to everyone. Yes, sir. Yes. Okay. A very good morning to all of you guys. Ma'am has already joined us. So, Mrs. Reena Sharma has a professional experience of more than 10 years, worked as a lecturer in Hotel Management Institute, where she held expertise in management, communication, and soft skills. She also served as an encouraging teacher and mentor for more than 4 years, and at present serving as a principal in Army Goodwill School, Pratapur. She is popular amongst her students as a skilled and efficient teacher, effective administrator, and is enthusiastic motivational speaker. At the time of pandemic, she is here with us to discuss parenting challenges and to focus on constructive child growth. During onset of pandemic COVID-19, she has a good experience to share from her diverse experiences as she is an army officer's wife and a mother of twins who are 5 years old. So the topic for the session is an COVID-19, an opportunity for students and parents. A very good morning, ma'am. The session is all yours. You can proceed with the session. Thank you so much. Good morning, dear students and parents. Hope you all are fine and fighting hard in this pandemic. Ma'am, the voice is Today, bit low. today's topic that we are going to discuss is COVID-19, challenges and opportunities. COVID-19 एक ऐसा वायरस हमारे देश में आया जिसने हर चीज को रोक दिया। साथ ही आई बहुत सारी चुनौतियां जिनको कि हमें अब अवसर में बदलना है। आज का मेरा टॉपिक यही है कि इन चुनौतियों को हम अवसर में कैसे बदलेंगे, क्या कर सकते हैं, because brimming minds are full of energy and that energy needs to be channelized. This is an interactive session. In between आपके जो भी questions होंगे, you can ask me, we'll discuss and we'll try to find out more and more opportunities that are available with us. So COVID-19, as we all know, is coronavirus. Okay, can one of you tell me what actually coronavirus is, how it affects our body? Okay, by now I think आप सबको पता ही होगा कि कोरोना वायरस क्या है. It is a virus that is outside the body और जब ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, it affects our body to the extent कि फिजिकली बॉडी बहुत हार्म होती है. ये कैसे फर्क डालता है? जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है, it attacks healthy cells, especially lungs. Virus, every cell has its RNA. जो 9th 10th के बच्चे हैं, they must be knowing कि हर सेल का अपना RNA होता है और हर ऑर्गन में डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स होते हैं. यही सेल्स हमारे बॉडी के अंदर सब फंक्शंस को करते हैं. अब जब एक वायरस ने आपकी बॉडी में एक हेल्दी सेल को अटैक कर लिया, उस वजह से क्या हो गया? हेल्दी सेल में वायरस जब गया, हेल्दी सेल ने वायरस के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिस वजह से आपकी बॉडी में हेल्दी सेल्स कम हो गए और जिस ऑर्गन पे अटैक किया, उस ऑर्गन ने अपना काम करना बंद कर दिया. कोरोना वायरस अटैक करता है लंग्स को, लंग्स के हेल्दी सेल्स को. अब जब हेल्दी सेल्स अटैक हो गए, लंग्स का व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स? Very good, Tanish, very right. Coronavirus enters our body through the nose, very true. And what happens when lungs are attacked? What happens? What will happen? Air will not be filtered
फ्रॉम एयर बेसिकली वी मीन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपरली बॉडी के सभी ऑर्गन्स को। तो अगर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, so what will happen? Your organs will not be able to function properly. Now, because of this situation, ये जो कोरोना वायरस है, हर चीज अफेक्ट हुई है। इनिशियली लॉकडाउन था, अब अनलॉक चल रहा है, बट हर एरिया डाइवर्सली अफेक्ट हुआ है। आप में से कोई प्लीज बताएगा कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हुए हैं because of this pandemic? Very right. Economy, trade, travel, education, everything has suffered. इतना ज्यादा सफर हुआ है कि we have to start again. Just imagine 2 grams of virus, इतनी छोटी सी क्वांटिटी में वायरस, it has affected 7.9 billion of advanced species. Why did I say advanced species? Because ये humans को affect कर रहा है। Humans जो हर चीज में बहुत एडवांस्ड है compared to other species present on the earth. Humans, they are intelligent, they are ahead in everything. अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारी टेक्नोलॉजी आज कितनी एडवांस्ड है that a live heart gets transported from one place to another and then gets transplanted in a patient. हर चीज में हम बहुत आगे हैं। To travel, we have different types of sources जिनसे हम एकदम जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। But did it all help? इतने एडवांस्ड होने के बाद भी एक वायरस, एक छोटा सा वायरस हम ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। So what does it mean? कि टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस जितनी भी एडवांस्ड हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अर्थ। अर्थ हमारा प्लैनेट जो हमारा भार लेके चलता है, वी हैव टू टेक केयर। हमें अपने अर्थ को बचाना है। कोरोना वायरस इज मोर डेंजरस कंपेयर टू अर्थक्वेक्स, कंपेयर टू सुनामीज। व्हाई? If anybody can tell me कि ये जो पेंडेमिक है ये ज्यादा नुकसान दे रहा है, राइट? Ramit, loss of life is high, very true, but why? अब सुनामीज आती है तो कई बार उससे भी पूरा का पूरा एक स्टेट, पूरा का पूरा एक गांव खत्म हो जाता है, राइट गुरु? इट इज परमानेंट, वेरी ट्रू। द रीजन इज जब भी अर्थक्वेक आता है, सुनामीज आता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, वी कैन प्रिडिक्ट इट इन एडवांस। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बता देता है कि दिस इज द स्पीड विद विच इट इज कमिंग, सो गेट प्रिपेयर्ड। न्यूज में आ जाता है कि दोज हु आर लिविंग ऑन सी शोर्स लीव दैट प्लेस। इतनी स्पीड है, इतना डैमेज हो सकता है, वी कैन प्रिडिक्ट इट। The problem with this virus is it is unpredictable. आप नहीं बता सकते हैं कि वायरस कहां से आ जाएगा, कितने एक्सटेंट तक आपको नुकसान पहुंचाएगा। राइट अविनाश? बिकॉज ये सब जगह फैला है एंड जो कैलेमिटीज है वो एक जगह आती हैं, बट स्टिल अगर एक जगह पे कैलेमिटी आएगी, उससे हुए नुकसान और इससे हुए नुकसान में बहुत फर्क है। कोरोना वायरस ने जो नुकसान किया है वो बहुत ज्यादा है, लॉस ऑफ लाइफ है, हर चीज सफर की है, हर वर्ग का इंसान सफर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। वेरी ट्रू तनिष्क। प्रॉब्लम विद कोरोना वायरस इज, जैसे नॉर्मल आम भाषा में कहा जाता है कि ये जुकाम का बिगड़ा हुआ रूप है।
to the extent that it takes lives. और हमें ये नहीं पता हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें कैसे ये कोरोना वायरस हमारे अंदर आ जाएगा. बिकॉज आप कहीं बाहर जाते हैं, सपोज यू टच्ड रेलिंग, ठीक है, या आपने कुछ सामान खरीदा, यू टच्ड इट अननोइंगली, आपने अपनी आईज टच कर ली या अपना नोज टच कर लिया, सो इट गॉट अ चांस टू एंटर योर बॉडी एंड वंस इट इज इनसाइड इट क्रिएट्स हैवक, पूरे सिस्टम को खराब कर देता है. अब ये जो आज की सिचुएशन है इंडिया में, वर्ल्ड में, इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं हमारे सामने. ये चैलेंजेस सबके लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस, पेरेंट्स के लिए चैलेंजेस थोड़े ज्यादा हैं. ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट, आप में से कोई अगर मुझे बताए व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ स्टूडेंट दैट यू फील are there right now, and what are the challenges as a parent which are there? Very good, Aditya. Very good, Ramit. Right. Disruption in formal education. जिस तरह से हम पढ़ा करते थे वैसे हम नहीं जा पा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं. There is a loss of study. Very true. This is the biggest challenge students are facing. Other than that, maintaining a healthy lifestyle, maintaining a routine. Okay, Ramit, you enjoy at home. If you convert these challenges into opportunities, definitely you can enjoy at home. So challenges are lifestyle, how to maintain a healthy lifestyle, how to maintain a routine, how to maintain a diet, how to cover up this loss. ये जो हमारा पढ़ाई का लॉस हो रहा है, we cannot go out. Not going out कैसे अफेक्ट कर रहा है? We cannot interact socially, जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. We cannot go out to play, जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. मैन इज अ सोशल एनिमल, हम सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन very good, Poonam, you are enjoying trainers at learning curve. They are very cool, good. This is what you should do. You should enjoy whatever you are doing. You enjoy your studies. First time sitting with family and understanding and getting more family love. Very good, Aditya. That's a very good point, because this pandemic is making us suffer. Parents को भी, बच्चों को भी. There is a total change in routine. अभी at present what is happening, आप भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पेरेंट्स भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं. So it's time to strengthen your bonds. Now, how to convert these challenges into opportunities? क्या कर सकते हैं कि ये जो challenges हम face कर रहे हैं, पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, इनको हम opportunities में बदल दें? Can anyone tell me what all we can do? Be positive and enjoy whatever we have. Very right, Poonam. कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा मैम, cause it's permanent, not temporary. Social distancing is must and should. Very nice, Avinash. Very good. But क्या करें कि ये जो स्टडीज सफर हो रही है, ये जो फिजिकल डेवलपमेंट सफर हो रही है, ये जो स्किल सफर हो रही है, ये सफर ना हो. इसके लिए what we can do? Brush up your skills. Very good, Poonam. Online platforms, use of technology. Very good. See, you have ample of time at your disposal right now. आपके पास बहुत time है. Yeah, Saurabh.
Ma'am, is this never going to end? Will we ever see? It is a phase. Definitely it will pass, right? पूरा वर्ल्ड वैक्सीन बनाने में लगा है, पूरा वर्ल्ड इन तरीकों को ढूंढने में लगा है जिससे हम ये वायरस को रोक सकें, जिससे ये वायरस को खत्म कर सकें. But by social distancing, by keeping ourselves safe is the best way. And ये phase है, it will pass, it will end. Definitely it is going to end. We have to be positive. Yes, Neha, we can definitely learn new things, right? आपके पास बहुत time है अभी. When you go to school, what happens? Obviously, there is a routine, but then you need some time. 6 hours in the school, and then 2 hours extra. Those 2 hours for getting up, for getting ready, having breakfast, having lunch, and then reaching your school, and then coming back. It also consumes time. Right, Poonam, enhanced use of technology and stop a bit from rat race and think about nature. Very true. So what happens now when you have so much of time? You are studying online, you are at your homes. So this is the time for skill development. Now there are many students who have joined today. आप में से कई बच्चे अलग अलग स्कूल से होंगे. हर बच्चा अपनी क्लास में टॉपर होगा, हर बच्चा अपनी क्लास में बेस्ट होगा. But when you two are on same platform in future, for example, facing any interview, what makes you different from others? Interview mein how we get selected? If you have something extra, वो something extra कैसे आएगा? This is the time. इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए स्किल्स डेवलपमेंट के लिए. स्किल आपके अंदर कोई ऐसी पॉजिटिविटी या कुछ ऐसा आपको आता हो विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट. इट कैन बी क्रिएटिव राइटिंग, इट कैन बी पब्लिक स्पीकिंग, इट कैन बी पेंटिंग. फॉर एग्जाम्पल, जब इनिशियली लॉकडाउन शुरू हुआ, टाइम वॉज वेरी टफ. With twins, with 5-year-old twins, there was no routine. If you tell them to study, they'll not sit. But इतना लंबा टाइम कैसे निकालेंगी? पढ़ाना है, कराना पड़ेगा. So what I did, I started understanding कि बच्चों में क्या चीज एक स्किल है जिसमें वो अपना टाइम डिवोट करे और खुशी से काम करे. राइट, बिकॉज छोटे बच्चों को जब भी आप बोलो कि हाँ पढ़ना है, लिखना है, दे गेट बोर्ड, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे. मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए दे विल कंसंट्रेट. सेम गोज फॉर एल्डर्स ऑल्सो, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, आप कितनी देर पढ़ सकते हो? यू कैन गिव 4 hours मैक्सिमम. जो बड़े बच्चे हैं, कि कोई आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो यू कैन गिव 4 hours. लेकिन एक छोटे बच्चे को इतनी देर बिठाना बहुत मुश्किल है. तो कैसे इतना 24 hours, जिसमें से ओके यू टेक 12 hours जो वो सोएंगे, बाकी उसके अलावा व्हाट विल यू डू 12 hours? सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दी स्किल. सो व्हाट आई डिड, आई एनालाइज्ड कि मेरी बेटी को पेंटिंग पसंद है. सो व्हाट आई डू, आई गिव हर समथिंग टू पेंट. I give her brush, I give her pencil, crayons, and she keeps on painting. So that is a kind of skill. My son loves dancing. So in the evening, 1 hour we have kept enhancing or working on this skill. इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा टाइम आप उसी को दो. You have to divide your time, because at present, first duty is study. After that, the time at our disposal, for that we need skill development. Right, कि हम जब भी बैठे हैं, if we are free, right, so rather than sitting idle, because आप लोगों ने सुना होगा idle man's mind is evil's workshop. जब आप खाली बैठे होते हैं, mind keeps on wandering. क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या कोई छोटे बच्चे होंगे तो वो कोई शरारत करेंगे, या बड़े हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग चलता रहेगा, which can lead to anxiety and stress.
एट प्रेजेंट हमारे बच्चों में ये भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि कभी एंजाइटी हो जाती है, कभी स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है, बिकॉज हमारा सिलेबस बहुत फास्ट है एंड कॉम्पिटिटिव्स में जाने के लिए वी नीड टू स्टडी थॉरोली, राइट? सो स्किल आपका उस एंजाइटी और स्ट्रेस को ओवरकम करने में भी हेल्प करती है. फाइंड आउट व्हाट यू आर बेस्ट एट, कि आप सबसे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो. इसमें कुछ भी हो सकता है. मे बी यू लाइक रीडिंग बुक्स, सो रीड बुक्स, राइट? गिव दैट 1 hour फॉर स्किल डेवलपमेंट which will help later on. Second is this time what you can do. आप सेल्फ लर्निंग के ऊपर जा सकते हैं. नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जब हम स्कूल जाते हैं वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन टीचर, कि टीचर हमें पढ़ाएगा, टीचर हमें बताएगा कि इसका क्या मतलब है, टीचर हमें बताएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं सही है या नहीं है. बट दिस इज द टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन. आप ऑनलाइन क्लासेस में जा रहे हैं, लाइक यू ऑल आर देयर इन द लर्निंग कर्व. सो यहाँ पे आपको ट्यूटर्स हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड दे मस्ट बी गिविंग यू क्वेश्चनियर्स. इससे क्या होगा, यू विल डेवलप योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग विच इज वेरी नेसेसरी. अब क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट, सपोज लेट अस टेक फोर्स का, देयर इज अ कंसेप्ट कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तो सबको पता होता है. लेकिन जब आप लॉजिकली और एनालिटिकली सोचना शुरू करते हैं, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट. कि फोर्स अगर मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसका क्या मतलब है? मतलब है फोर्स मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड मास फोर्स एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मोर इज द एक्सेलरेशन, मोर विल बी द फोर्स. तो ये जो हम साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये डेली लाइफ में अप्लाई होता है. So when you increase your logical and analytical thinking, तो आप डेली लाइफ में वही चीजें अप्लाई करके you can be a problem solver. Third and most important thing is immunity. वायरस ने एक चीज सिखा दी, today's life you have to survive. तो आपको फिट होना पड़ेगा, आपको इम्यून होना पड़ेगा. 1903 में थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था कि फ्यूचर के जो डॉक्टर्स होंगे, फ्यूचर के डॉक्टर्स जब भी दवाई देंगे या जब भी ट्रीटमेंट करेंगे, वो मेडिसिन नहीं देंगे, वो डाइट में चेंजेस कराएंगे, वो प्रिकॉशंस लेने को कहेंगे. करीबन एक डेकेड के बाद हम देखते हैं कि वही बात सच होती है. मेडिकली हम बहुत एडवांस्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस्ड हैं, बट फिर भी इस वायरस को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. Okay, Aditya, any suggestions for 10th and 12th students who will be having board exams next year? Definitely. See, Aditya, we all have to work on that logical and analytical thinking. हमें पढ़ाई करनी है, not just to attain marks. We have to read our syllabus thoroughly, right? We just don't have to mug up things कि नहीं, आपको अगर एक कंसेप्ट है उसको याद करना है, because questions में what happens, sometimes practical applications are there. So to score marks, to score good, we need to study properly and thoroughly. And because you are at home, the biggest challenge is who is judging your progress. School mein you have tests, you have pre-boards. Right now, how will you judge your progress? For that, learning curve is a platform. कि आपकी daily progress you can also judge and your tutors are also judging. Right? So what you do, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, you read any topic, right? For 2 days, suppose you are reading. Third day, analyze yourself. कि मैंने जो पढ़ा था, what did I study? Without opening the book, what did I study? How much I learn? How much I remember?
So that ways you only are judging yourself. Abhi, as per government, maybe November onwards, schools will reopen. That is again a challenge. If school reopens, obviously most of us will love to go to school. But स्कूल जाने में अलग तरह के challenges हैं. उसको opportunity में कैसे बदलना है, वो भी we have to see. Right, Tanish, there is a lot of danger. That is what I'm talking about, immunity. तो एडिसन ने जो कहा था वो कुछ टाइम बाद वो बात सच हो गई. मेडिकली इतने इक्विपमेंट्स हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी मेडिसिन हैं, बट स्टिल एक छोटा सा वायरस अफेक्ट कर रहा है. इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है कि बाहर नहीं जा सकते. अगर मुझे अपने बच्चों को बाहर लेकर जाना हो, आई एम वेरी स्केयर्ड. आई एम स्केयर्ड कि कहीं बच्चे टच ना कर लें, बिकॉज एल्डर्स नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. छोटे बच्चों को ये चीज सिखाना, सोशल डिस्टेंसिंग, देन नॉट टू टच एनीवेयर, ये बहुत मुश्किल होता है. तो व्हेन आई हैव टू स्टेप आउट, आई हैव टू थिंक, रीथिंक एंड रीथिंक. आई एम टेकिंग माय किड्स आउट, so how will I manage? But still you have to manage. But in this case, the best vaccine is being immune. अगर आप ये वायरस ने जिस तरह से इफेक्ट किया है उसको देखें, तो इंडिया में लेस देन 60 इयर्स के लोगों को 50% अफेक्ट किया है, जिसमें ओल्डर वंस को ज्यादा किया है और यंगर वंस को कम किया है. उसमें भी देयर इज वन थिंग कि अगर कोई पहले से मेडिकल कंडीशन रही है तो इट इज मोर रिस्की, और अगर पहले से मेडिकल कंडीशन नहीं है देन यू आर लिटिल बिट एट द सेफर साइड. अगर आप चेक करें एक सिनेरियो, 45 से लेके 60 इयर्स तक के लोगों को जो ये वायरस ने अफेक्ट किया है, जिन लोगों में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन थी, उनमें डेथ रेट है 13.8% और फिट में है 1.5%. Do you know what it means? Very good, Tanish. Older ones have low immunity related to elders, right? What is the meaning of this rate? That those who had some medical condition, they suffered more. Casualties were more, fatalities were more compared to the ones who were fit. It was 13.8% and 1.5%. What is the meaning? I'll request somebody in 12th standard to please answer it, or 10th standard. Okay, I'll explain. 13.8%, it means if 100 people are getting affected, अगर 100 लोग बीमार हो रहे हैं, 100 में से approximately 14 people will die for sure, जिनको कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है. एंड अगर आप फिट हैं, फिट में दिस परसेंटेज इज ओनली 1.5%. That means if 100 fit people are getting affected, only out of them 1 or 1.5, 1.5 means approximately 2, they will die. यही सिनेरियो लेस देन अगर 45 इयर्स में आप लेते हो, तो 45 इयर्स में प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन में ये रेट है 8.8% एंड फिट में है 0.5%. That is, out of 100, almost 9 people, those who are already ill will die. And out of 100, not even one will die. If there are 200 ill fit people, one will die. See the difference. अगर आप आज की डेट में एक ट्रेंड देखें, most of the elder ones are suffering from lifestyle diseases. What is this lifestyle? Anybody can tell me? ये lifestyle क्या है? लाइफस्टाइल एक रूटीन है जो हम अपने लिए बनाते हैं.
Tanishq, jobs. Because of jobs also we have lifestyle. Because nowadays most of the jobs are sitting jobs, right? अब इनसे क्या होता है? We suffer from lifestyle diseases. What are those lifestyle diseases? क्या है lifestyle diseases? Very true, Aditya. Diabetes. Yes. पहले होता था, बहुत कम सुनने में मिलता था कि somebody is suffering from diabetes. And nowadays, if you look at the trend, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे elders, बहुत सारी younger generation is suffering from these diseases. Includes diabetes, obesity, high BP, cardiovascular diseases. These diseases are lifestyle diseases. But what is the reason कि ये diseases आजकल इतने बढ़ गए हैं? What do you think is the reason? Eating habits. Very nice, Aditya. जो हमारी बदलती हुई ईटिंग हैबिट्स हैं और जो हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल है, वो कारण है इन लाइफस्टाइल डिजीजेस का बढ़ने का. रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई. एक 18-year old गर्ल, नॉट प्लेइंग आउटसाइड विद फ्रेंड्स, राइट आदित्य? एक 18-year old तिरुचि से, शी कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट. व्हाट शी डिड, 30 days का शी टुक अ चैलेंज. आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन बहुत सारे चैलेंजेस चलते हैं. कोई चैलेंज लेता है, कोई कुछ और चैलेंज लेता है. तो शी टुक अ 30 days चैलेंज. 30 days के लिए शी टुक अ चैलेंज कि मैं 30 days तक आई हैव ओनली जंक फूड. ओवर इज योर टेक्नोलॉजी. वेरी गुड गुरु शरण. राइट. The increase in the screen time is leading to all this. So what happened when that girl took the challenge? कि 5 days के लिए मुझे सिर्फ जंक फूड ही खाना है. I want to see how it affects. Why she took this challenge? Because 2 of her very close friends died because of heart attack. 18-year-old. Just imagine. 18-year-old. इतना छोटा बच्चा heart attack. So she took this challenge. And आजकल भी आप देखोगे एक recent survey के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमारे छोटे बच्चे ओबीस हैं. बहुत सारे हमारे छोटे बच्चे लाइफस्टाइल डिजीजेस से सफर कर रहे हैं. बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे होंगे, आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़ने के लिए दे यूज ग्लासेस. आजकल अगर आप ट्रेंड देखोगे ये चीजें ज्यादा हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर. जब वो गर्ल ने चैलेंज लिया तो शी स्टार्टेड टेकिंग जंक फूड. जब वो जंक फूड शी हैड फॉर 2 days, 2 दिन में चेंजेस ऑब्जर्व हुए. A sugar sensor was attached to her body कि ब्लड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. After 2 days, only after 2 days, 2 दिन complete junk for 5 times, what she noticed, there were changes in the body. कैसे changes आए? Sugar level high हुआ. She felt lethargic. She felt tired. And she caught cold. Catching cold means immunity was lower. Then she continued her challenge. अपना 30 days का challenge she continued. So when she continued her challenge after 30 days, negative impacts were weight gain, low immunity, low WBCs, lethargic, irritated, and had anxiety. These all were the changes in the body. अब ये जो changes आए, ये आए 1 month junk food consume करने के बाद. But now tell me, क्या 1 month ही लगेगा इन changes को reverse करने में? Do you think कि 1 महीने में जो negative impact हुआ है वो positive हो जाएगा if she will have healthy food for 1 month? It did not happen. अपने normal routine में आने में she took 4 months. अपने
नॉर्मल बॉडी में आने में शी टुक 4 months, 1 month junk and then 4 months to get normal. So yes, Sumit, she did not take 1 month. हाँ, जो हम जंक खाते हैं उसकी आदत पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द कंटेंट्स, बिकॉज ऑफ द मटेरियल्स, बिकॉज ऑफ द एडेड थिंग्स इन इट. जैसे उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं. प्रिजर्वेटिव्स के अलावा जो भी हम खा रहे हैं उसमें किसी में लेड है. लाइक मैगी का पीछे बहुत विरोध चला था कि उसमें लेड है, MSG है. दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. So after this girl's experiment was over, doctors came to a conclusion, और वो conclusion था junk food is not at all good for our body. Junk food में added sugar है, added carbohydrates है, and nutrition is not there at all. हमारी बॉडी को चाहिए carbohydrates, fats, proteins. फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब हम होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें बैलेंस डाइट, फूड, ये चैप्टर्स शुरू हो जाते हैं जिसमें वी आर टोल्ड कि दीज थिंग्स आर हेल्दी, वी शुड ईट. इनफैक्ट UKG में in my kids EVS books this chapter is there. So they have given food, what all do we eat, so all the healthy things are mentioned. But what do we end up doing? जो हम पढ़ते हैं we keep it till books only, सिर्फ किताबों तक रखते हैं. And what do we in real life? Totally opposite. Don't you think so? This is what we are doing. We all know we should eat healthy. But how many of us do apply? Right, Dinesh? So this is what we are practicing and it is not a healthy practice. हमारी body genetically developed है locally और घर का खाना खाने के लिए. Don't spoil or don't misuse your body. You must have heard there is a very popular saying, healthy mind resides in a healthy body. Right? And body is the temple and soul is its God. So you have to take care of yourself. And in this coronavirus pandemic, one thing is crystal clear. We have to be fit if we want to fight. This is one virus. In between, there were news there is one more Hanta virus, which is more deadly. Right? So that means this is not the end. अगर आप ये सोचें कि कोरोना वायरस है, ठीक है, ये चला जाएगा, दवाई आ जाएगी, तो क्या कुछ और नहीं आएगा? हर चीज से लड़ने के लिए we have to be fit. डार्विन की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जो बड़े बच्चे हैं, he said survival of the fittest. जो सबसे ज्यादा फिट है वही सरवाइव करेगा. बट अभी इस टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को फिट कैसे रखें, इम्यून कैसे बनाएं, इट्स द बिगेस्ट चैलेंज. फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ईट होममेड हेल्दी फूड, घर का बना हुआ हेल्दी खाना. एंड बिकॉज यू पीपल आर स्टडिंग UKG फर्स्ट से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, we have to tell our parents also, we have to share with our parents also कि हमें हेल्दी खाना खाना है. And no to junk food. मार्केट में if you go, जब पहले का टाइम था, I guess 20 to 30 years back, बहुत कम ऐसी चीजें मिलती थी कि आप जंक जो आप लेते थे. Mostly people used to travel, they used to carry their food. But nowadays, there are so many options, lucrative options, that you get carried away. This is the time we don't have to get carried away. We have to change this thing. We have to be healthy. We have to be immune. And to be immune, there are few things which are mandatory. क्या है? सबसे पहले healthy खाना. बैलेंस्ड डाइट. आप सब पढ़ते हैं, देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स जो हमें लेने ही लेने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. वी शुड हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें हेल्प करते हैं. यस सुमित, नो जंक फूड एट ऑल. Promise yourself today that
we'll make our body healthy. We will not spoil our body. Because today you are studying, tomorrow you'll get your jobs, which will be mostly office jobs, sitting jobs. Then also you have to keep yourself healthy. You have to keep yourself fit. How will you do it? Yes, very good. Keep ourselves hydrated. What is the meaning of word hydrated? Hydrated क्या है? Yes, Aditya. What is the meaning of word hydrated? Water. Very true. Hydrated means having lots and lots of water. जैसे अभी पैंडेमिक है, हम घरों में ही हैं, वी आर नॉट गोइंग आउट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, व्हेन यू आर स्टडिंग, बहुत स्ट्रेच तक आप पढ़ रहे हो, बड़ी देर तक आप पढ़ रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, आपको प्यास नहीं लगेगी. एंड विंटर्स आर कमिंग, विंटर्स में वैसे भी पानी कम पिया जाता है, राइट? सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मुझे पानी पीना है, मुझे वाटर रिच फूड्स खाने हैं. वेरी गुड नेहा. water rich foods खाने हैं, which are fruits. Eat as much as fruits as you can. Daily make it a routine कि fruit खाना ही खाना है. Kumbar, right? Right, Aditya. Very true. If you're preparing for NDA, definitely you have to eat healthy so that you are medically fit. You have to keep yourself hydrated. पानी पीजिए, ऐसे फूड्स खाइए जिसमें खूब सारा वाटर हो. देन सनलाइट. इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी टाइम लगे, हैव सम सनलाइट. आजकल क्या होता है, सन रेज आर वेरी हार्मफुल. यस प्रशांत, लाइक वाटरमेलन्स ट्रू, बट विंटर्स में वाटरमेलन्स वोंट बी अवेलेबल. तो जो मिलता है जिसमें लगता है कि वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा है, have those fruits. Have teas. Tea में have green tea और have turmeric tea. हम लोग ये चीजें भूलते जा रहे हैं. And if you look at the Americans, they are selling it. They are selling turmeric latte. What is it? हल्दी वाला दूध. Do we have? I don't think so कि अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो 50% भी वो हल्दी वाला दूध लेते होंगे, जबकि it is an immunity booster. It has antibodies, right? Turmeric milk. Very good, Pooja Singh. Turmeric milk. काढ़ा, right? काढ़ा you can have winters में. So इससे क्या होता है, your body becomes immune, as well as जो water के level है body में होना चाहिए जितना, that is maintained. So we need to make these dietary changes. Healthy खाना, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं खाना है, ये मुझे पसंद नहीं है, साग I don't like. No, all green leafy vegetables, all colored vegetables are very good for us. Yes, Neha, ginger water, right? Ginger also helps in building immunity. ये जितने भी आपके ginger है, then your turmeric, then cardamom, these help in boosting immunity. Notice right now, तो डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं. Right. पहले भी diseases थे, but then that time we used to walk. Right. Lockdown, because of lockdown, you became lazy and had disease. Finished. So that is what we are discussing. This is a challenge, and you have to convert it into opportunity. आप कह रहे हैं because of lockdown you became lazy. How can you become lazy? You are so young. You are full of energy. How can you say you are lazy? You cannot be. इतनी एनर्जी होती है हमारे अंदर that we have to utilize it. And then you will be in routine. हम क्या करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, 6 days we go to school, Sunday is our rest day. So we get up in the morning, स्कूल जाने के लिए we get up early, we get dressed and then we go to school. We are in routine. लेकिन जब संडे आता है, so it is our relaxed day. कि संडे है, no routine, not going anywhere and we will rest. But अभी लॉकडाउन में we are not going anywhere. We are staying at home only. So that means every day is a Sunday. We cannot take that
is very harmful for our body. तो उसको क्या करें, उसके लिए कैसे उस चीज को हटाएं? For that, you can start yoga, you can start exercise, you can start pranayam. ये तीनों चीजें करने से, राइट नेहा, मेडिटेशन, वेरी गुड, ये सब चीजें करने से व्हाट वी कैन डू, जो हमारा वो लाइफस्टाइल में एक चेंज आ गया है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव बिकम लेजी, बिकॉज ऑफ विच वी हैव बिकम इनएक्टिव, हम उसको गायब कर सकते हैं. We can help ourselves, we can help our body, because we have to make ourselves fit. Right, start exercising. Very cool, very good, Sumit. अब आप मुझे ये बताइए, if no routine is there, if we are not going out, we are not going out to school, do we get up at 7 in the morning? आप में से कितने बच्चे 7 o'clock उठते हैं? Please write yes in the inbox if you get up at 7 o'clock. Very good, Neha. Very good. Oh, Aditya, sometimes. Aryan, right. Oh, there are many. Tanishk, very good. You get up at 5. Very nice. Good. See, uh, there is different number of hours of sleep which we need. Suppose I, as an adult, at present I need 6 hours of sleep. Very good. 4:30 for cycling. Good. Neha, 8 hours. Right. For you people, it is 8 hours. For me, it is 6 hours. This is the time which body needs to rest. इतने time में body rest कर लेती है. So one thing most important, we should get up early in the morning. जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, you have ample of time. पूरे दिन बहुत time है पढ़ने के लिए, अपना कोई एक्टिविटी करने के लिए, और अपनी बॉडी को टाइम देने के लिए, which is very important. So when you get up in the morning, make a routine for yourself, a healthy routine. Morning में do some pranayam, do some yoga, do some exercise. तो वो जो एक void create हुआ है कि आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं. Okay, very good, Tanish. 1 hour to exercise. Very good, brilliant. That is what we need. So अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं, you will be fit. अगर आप अपना ये रूटीन बना लें, सो ये जो रूटीन आप अभी लॉकडाउन में या घर पे रह के बनाएंगे, दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग रूटीन. दैट विल नॉट बी लाइक स्कूल कि हम उठे हैं, स्कूल है तो वी हैव टू गेट अप अर्ली, स्कूल नहीं है या छुट्टियां हैं, वी कैन टेक रेस्ट. अगर अभी आप ये रूटीन बनाते हो, ये रूटीन आप पूरा टाइम फॉलो करोगे. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम? क्या इंपॉर्टेंस है? आप पूरा दिन सांस लेते हैं, पूरा दिन सांस लेते हैं हम सब, वी टेक ऑक्सीजन, बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी ब्रीथ प्रॉपरली? हम सांस बहुत अच्छे से कब लेते हैं? रेयरली. हम थोड़ी सी ऑक्सीजन लेते हैं एंड देन वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल के लिए जरूरी है. For that, we need deep inhaling, and that is where yoga, exercise, meditation, and pranayam comes into play. Yes, Tanish, it keeps our body fit. Very good. So what happens when you get up in the early in the morning and you do some yoga, you do some exercise, you do some pranayam? Your cells of the body, all the cells of the body, they get oxygen, they get air which is rich in oxygen. And morning mein air is, you can say, most fresh in the morning. Later on, eventually, quality of the air decreases. Why? Why did I say quality keeps on decreasing? जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है, तो जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, किस क्वालिटी की इनहेल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ऑक्सीजन कम होती जाती है. राइट. सो उससे क्या हुआ कि जो आप एयर ले रहे हो, अपनी तरफ से तो आप ले रहे हो, पर जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, जितनी फ्रेश एयर जानी चाहिए, वो नहीं जाएगी. यस पूजा, रिलैक्सेशन. राइट. जब हम ये सब करते हैं, वी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्सेस. हम
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, एंड जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं हम इनको पीछे छोड़ते जाते हैं. Basically, what happens in the body, whenever you consume food, it is utilized by the cells of the body. Different nutrients are absorbed और फिर वो body में utilize हो जाते हैं. What leads to obesity or what leads to these lifestyle diseases? कि जितना आपने खाना consume किया है, वो utilize नहीं हुआ है. You did not get enough nutrients, or you had kind of food which is not getting digested. जैसे कई बार बहुत heavy खा लें, so you don't feel good, आपको lethargic भी लगेगा, you'll feel sleepy, you don't feel like sitting, लेटने का मन करेगा. So when you do yoga daily, it will help you, right? अब जो हम बात कर रहे थे जंक फूड की, जैसे जंक फूड खाते हैं तो वो भी क्या करता है, लेथार्जी का मतलब है तनिष्क कि आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा. सपोज देयर इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, आपको इतना आलस आएगा, इतनी सुस्ती आएगी कि आपका मन भी नहीं होगा कि वो बुक उठा के आप पढ़ें और या बैठें, राइट? यस नेहा, आलस, गुड. सो जब आप जंक फूड खाते हैं तो वो बॉडी को हार्म करता है. तो जितना हम आज तक खा चुके हैं उसने जो हार्म किया है उसे हमें वापस से ठीक करना है. हाउ विल वी डू? विल डू विद दीज थिंग्स. अगर आप योगा करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सब जो जो हार्म हुए हैं वो ठीक होते जाएंगे. आप इतनी ऑक्सीजन लेंगे, हर सेल में इतनी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी कि जो भी बैड कंपोनेंट्स बॉडी में है, छोटी छोटी अगर बैड कोई इंप्योरिटीज है वो खत्म होती जाएंगी. जंक फूड जो है सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं खराब करता. जब हम जंक फूड खाते हैं इनडायरेक्टली हम एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे हैं. आप बता सकते हैं कैसे? एनीवन ऑफ यू? जंक फूड एनवायरनमेंट को भी खराब करता है. वेरी गुड नेहा. प्लास्टिक, राइट. जब हम जंक फूड खाते हैं दैट कम्स इन पैकेजेस, बड़े अच्छे अच्छे से पैकेजेस होते हैं. यस आदित्य, पोल्यूशन, दैट लीड्स टू द पोल्यूशन, एंड प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. व्हाट डज इट मीन? रैपर, राइट नेहा? जो प्लास्टिक होता है वो गलता नहीं है. अगर आप धरती के नीचे प्लास्टिक को बड़े सालों तक भी दबा के रखोगे इट विल नॉट डिग्रेड. बाकी चीजें जो है वो डिग्रेड होती है, जैसे वुड या बाकी जो कॉटन के कपड़े हैं दैट डिग्रेड्स, बट जो प्लास्टिक है वो खत्म नहीं होता है. दैट लीड्स टू पोल्यूशन. यस कनेश, इट विल रिमेन एज इट इज. और अभी आप देखे होंगे कभी जो सी में से निकाला जाता है बहुत सारा प्लास्टिक वेट, कभी कहीं से निकाला जाता है. ये प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है? ये वो पैकेजेस हैं, ये वो पैकेट्स हैं जो हम जंक खा रहे हैं. जस्ट इमेजिन हाउ मच जंक वी आर कंज्यूमिंग, राइट? देन योर योगा, meditation, pranayam, exercise, they help in building concentration also. आप पढ़ाई तभी अच्छे से कर पाओगे when your mind is concentrated. आपको फोकस कर पाओ. Your mind is not wandering. You are not having different thoughts in your mind. Because जैसे अभी घर पे हैं, we are not able to meet our friends, we are not able to go out. So कभी कभी एक एंजाइटी होती है कि what phase it is. We used to enjoy, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. So how do we overcome it? We can overcome it by doing yoga. जिससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है कंसंट्रेटेड रहेगा. माइंड विल बी एबल टू फोकस. तो ये हमें कुछ एक लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं जिनको करने के बाद ही हम अपनी बॉडी को फिट रख पाएंगे. एंड आई टोल्ड यू फिटनेस इज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी. बच्चों को घर पे रखना एक बहुत मुश्किल काम होता है पेरेंट्स के लिए, राइट? एंड देन इट इज एन अपहिल टास्क टू मेक देम स्टडी. छोटे बच्चों को स्पेशली कुकिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग. वेरी गुड नेहा. सो व्हाट वी कैन डू, लाइक नेहा सेड, पेरेंट्स और बच्चों को एक रूटीन बनाना है, एक हेल्दी रूटीन बनाना है जिसमें पढ़ाई भी इन्वॉल्व है, साथ में बाकी स्किल्स लाइक नेहा सेड कुकिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग या बाकी एक्टिविटीज. अभी टाइम है पेरेंट्स के साथ वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का.
जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का काम होता है, देन योर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग आउट, तो पेरेंट्स और बच्चों की इंटरेक्शन बहुत कम हो जाती है. नाउ इज द टाइम टू स्ट्रेंथन दैट बॉन्ड. यस, यू कैन हेल्प योर मॉम. जो भी आप छोटी मोटी चीजें आप हेल्प कर सकते हो, यू शुड डू. आप कुछ भी करो, लाइक नेहा वेरी गुड इन क्लीनिंग. सपोज लाइक नेहा सेड क्लीनिंग. अगर इफ यू आर हेल्पिंग योर मॉम इन मॉपिंग, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ मॉम की हेल्प नहीं कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ ऑल्सो. हाउ? एक आपने एक्टिविटी इंक्लूड की जिसमें यू आर बिकमिंग एक्टिव. सेकेंड थिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स. जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हमें बहुत चीजें सिखानी पड़ती हैं, जैसे फाइन मोटर स्किल्स की हाथ की फिंगर्स कैसे चलानी है, देन मोटर स्किल्स, हाउ टू मूव योर आर्म्स एंड ऑल, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल स्किल्स. सो जब आप ये सब करते हैं तो आप इन स्किल्स को बढ़ावा दे रहे हैं. तो हेल्प योर पेरेंट्स. But now here, once again, it's a challenge. Some of the parents are working, both the parents are working. तो वो बच्चों को कैसे टाइम देंगे? Because ऑफिस है, मम्मा का भी ऑफिस है, पापा का भी ऑफिस है. वो टाइम कैसे निकालेंगे? वो टाइम निकालने के लिए हमें अपने काम को इकट्ठे चलाना पड़ेगा. कि when kid is studying, mother and father, parents are working, or one of them is working, one is free. And when kid is free, at least one of them is free to appreciate the kid, to work with the kid, to help the kid. क्योंकि बच्चा पूरा दिन 24/7 kid is with parents. If you are free, अगर पेरेंट्स both of them are working, अगर आप फ्री हैं थोड़ी देर के लिए, you cannot go out. Obviously हमारे बच्चे मिस करते हैं, पिकनिक्स मिस करते हैं, हमारे बच्चे मिस करते हैं बाहर जाना, बाहर का खाना, right? So what we can do, we can sit with our kids. ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा एक बेडशीट लेके एक छोटा सा टेंट बनाइए, उसमें बच्चों के साथ बैठिए, engage them with you. That ways we can remove this anxiety जो हमारे बीच आ रही है, जो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं. ये स्ट्रेस लीड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस. जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब एग्जाम की टेंशन होती है, या जब तो आपका माइंड बहुत भागता है, क्या करें क्या करें क्या करें, तो उसमें एट टाइम्स वी टेंड टू ईट, मंचिंग शुरू कर देते हैं कि यार बहुत टेंशन हो गई, बहुत टेंशन हो गई, या यू कीप ऑन थिंकिंग क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे. तो पेरेंट्स, इट इज योर टाइम टू स्ट्रेंथन दैट बॉन्ड. बच्चों की बहुत हेल्प करनी पड़ेगी. Now next challenge is waiting for you. 9th to 12th they are saying schools खुल जाएंगे, colleges, universities already खुल चुकी हैं, they will go out. The challenge is how to keep them safe. घर पे तो parents are there to monitor. बड़े बच्चे they know self what is the meaning of quarantine, what is the meaning of social distancing. But छोटे बच्चों को कैसे? So it is a challenge. हमें अपने बच्चों को ये चीज सिखानी पड़ेगी. Being hygienic is not a good habit now. It is a skill which we all should have. हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा to keep ourselves safe. Because अगर घर पे कोई भी एक इस वायरस से बीमार होता है, it is affecting others also. ऐसा नहीं है कि ये आप तक ही रुकेगा. दो अभी जो स्टडीज आ रही हैं, स्टडीज अलग अलग तरह की स्टडीज जो है वो वेरी करती हैं. So we have to make a healthy routine. We have to make healthy routine for ourselves. We have to make healthy routine for our kids. और जो अभी आप एक अच्छा रूटीन बना लेंगे, right, पूजा, self care is the only solution. We have to take care of ourselves. Right, Tanay. Kids follow by examples. बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं. So if they will see कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे भी वही चीजें रिपीट करेंगे and they'll become more and more aware. लॉकडाउन के दौरान कोरोना के बारे में इतना डिस्कस हुआ, न्यूज में डेली कोरोना की अपडेट्स आती थी. तो माय 5-year-olds, they were totally aware. पूरा पता था कि हाँ, जैसे ही हम बाहर गए, इवन इफ दे आर प्लेइंग आउटसाइड,
they'll come back. अगर आप उसमें अकेले ही खेल रहे हैं, then also they'll come back and wash their hands immediately. हम बाहर गए थे. They are 5-year-old. Mask लगा दो, they will not touch their mask. They will not remove their mask. So we have to make sure कि बच्चों में ये habits imbibe हो, बच्चों को पता चले. Now I have a routine for my kids. Initially I suffered कि बच्चे पढ़ने नहीं बैठेंगे, बात नहीं सुनेंगे, they'll be like free birds कि बस जो मन में आया है वो करना है. Then I started realizing, no, this is not going to be like this. I have to work on this. Otherwise, इतने छोटे बच्चे हैं, they forget very easily if you don't work on them. And it takes 21 days to build any habit. So if you start getting up early, if you start with your yoga and exercise, it will take minimum 20 days एक habit को बनाने में, and then उस habit को regularly practice करने में. और वो जो आपको changes दिखेंगे अपने में, you'll feel more fresh, you'll feel happy. It will take 21 days. So give yourself that time. 21 days के बाद you can find out कि हाँ, there are changes, and definitely there will be positive changes. So now if I have set a routine for my kids, how it is benefiting me. Now I am less stressed. They know in a day for 3 hours we have to study. 1 in the morning, 1 in the afternoon, 1 in the evening. So when I tell them, okay, it's time to study, आते हैं, अपना काम करते हैं, and then they are free. They go out to play. I have set up a routine for themselves. They sleep early at night. Come what may, जो उनका routine है वो उस time पे सोएंगे ही सोएंगे. So they are early risers. Now I don't have to force them to get up. They get up on their own. अपने आप उठते हैं. They know what is their routine. So my life is hassle free. As a student, it is benefiting them. They are practicing regularly. रोज पढ़ रहे हैं. It is benefiting them. कि उनका कोई भी subject, उनका कोई भी syllabus पीछे नहीं रह रहा है. They are at par. So that means you can also set up a routine for yourself. Now, as a mother, I have set up a routine for my kids. I have set up, पूरा set करके रखा है, so I'm not facing any problem. So then also, I cannot say that I am a superior mom. I'm the best mom. No, there is somebody outside who is working but still managing everything. I am staying at home. I am taking care of my kids. बच्चों का ध्यान रखती हूँ. उनके लिए मैंने routine set कर दिया है. But there is a mother who is into healthcare. She has to go out. Then also she is taking care, right? So one thing we have to keep in mind that everybody is best, everybody is good in her or his own area. No one is superior, no one is inferior. It's all in the mind, it's all here. You don't have to bring anything here. Because of this situation, when you are not going out, when you are not interacting, so at times feelings आती हैं कि maybe I'm lacking somewhere. No, you are not lacking. But just remember, focus and keep practicing. Don't lose track. मेहनत करते रहो. For example, Usain Bolt. Do you know who he is? Usain Bolt. Okay, Usain Bolt holds the record of fastest sprinter. Runner, very good. Sprinter, very good. He holds a world record, right? So now, after after achieving a record once, did he stop? No, he kept on focusing. He kept on running to break his own record. So if anywhere you get a feeling, I am the best, or I'm very good at this, just think about it. आपके स्कूल के बाहर और भी स्कूल्स हैं, उसमें भी कोई बच्चा होगा who will be best. Yes, Divyansh, he is the fastest runner in the world. He holds a world record, 100 meter में. Do you know how much is that record? 100 meters in how many seconds? Anyone? No, Aditya, it's not 10 seconds. 9.75 seconds. Very good. So, other than this, if you think कि
उसेन बोल्ट ने एक बार रिकॉर्ड अचीव कर लिया एंड देन ही सेड्स आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड देन ही कीप ऑन टीजिंग एवरीबॉडी, सो व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट टाइम समबडी एल्स विल कम जो ज्यादा मेहनत करी होगी. एट द एंड ऑफ द डे ये रेस कौन जीतेगा? जो ज्यादा मेहनत करेगा, जिसकी एंड्योरेंस ज्यादा होगी. Right, 9.80, and then he break. But at present also, do you think he is the fastest runner? अगर आपने न्यूज सुनी होगी फरवरी की, तो इंडिया से देयर वाज सम न्यूज, अगर आपने सुनी होगी, if anybody can share that. It was about a farmer who ran in his paddy field, और वो वीडियो अपलोड हुआ था, and he was faster than Usain Bolt. फरवरी में अभी न्यूज आई थी कि he ran so fast. Yes, he was from Tamil Nadu. Very good. Students, I'll say one thing. Keep updating yourselves. जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ keep your present knowledge up to date. Right? You are staying at home, so you can read newspapers. आप क्लासेस लगाते हैं, आप वर्चुअल क्लासेस लगा रहे हैं. कीप योरसेल्व्स अपडेटेड कि आजकल क्या चल रहा है, व्हाट आर द रिकॉर्ड्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू कि जो हम ये बात कर रहे हैं सुपीरियरिटी की, और तो जोकोविक, वी ऑल नो हु ही इज. एनीवन? Yes, Aditya, we should read newspapers and we should read editorials. Very good. That helps in improving our English. That helps in improving our general knowledge. Very important. ठीक है. And editorials also help in improving our language. किसी भी language का newspaper पढ़िए, right? आपका editorial में इतने अच्छे words आते हैं, you'll be glad to learn those words. Yes, he's a tennis player, ace tennis player. At present, he is ranked number 1. But was he always number 1? क्या वो शुरू से ही number 1 था? No, right, प्रशांत? उनसे पहले कौन था? Who was ranked 1? Yes, Aditya? Nadal. Okay. And what is the ranking of Roger Federer? Roger Federer was ranked before him. Right? तो अब अगर हम यही मान के चलें कि ठीक है, he is number 1, he is feeling superior, हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम अचीव कर पाएंगे? No, we need to work constantly. कभी भी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ता है. अगर आप अपने स्कूल में टॉपर हैं, राइट, अगर अपने स्कूल में टॉपर हो, देयर इज अनदर स्कूल. अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हो, देयर इज स्टेट, देयर इज नेशन, देयर आर किड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट. तो कभी भी डोंट गेट सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ कि ओके आई हैव अचीव्ड दिस, दैट मींस ओके आई एम बेस्ट. नो, इट विल किल यू. आपकी थिंकिंग को ये खत्म कर देगा, राइट. एंड इट इज सेड, it is not important to know everything under the sky, but yes, it is important to know something of everything under the sky. कि जो भी चीजें हैं, हर चीज का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली पढ़ो, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ न्यूज़पेपर्स भी पढ़ो, राइट. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम हमेशा अपने माइंड को फोकस्ड रखें. सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी वाला एक जो सोच है, कभी भी अपने दिमाग में ना आने दे. एंड वी शुड नेवर टीज एनीबॉडी ओवर दिस इशू, राइट. नाउ these were the opportunities which are available with us. हमें अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने स्किल्स को बढ़ाना है, किसी ना किसी एक स्किल को बढ़ाना है जो भी हमारे पास टाइम है, हमें सेल्फ लर्निंग को बढ़ाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है. ये कोरोना वायरस ने हमें जो ये चैलेंजेस दिए, अपॉर्चुनिटीज हमने अपने लिए ढूंढी, इसके साथ ही हमें कुछ एक लेसन्स भी सिखाए. वो लेसन्स थे, पहला कि हम लोग बेस्ट नहीं हैं, चाहे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट स्टिल देयर इज लॉट मोर टू लर्न. अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ तरक्की करना बाकी है. सेकेंड थिंग,
अर्थ, हमारा प्लैनेट अपने आप को किसी ना किसी तरह रीजनरेट कर लेगा। अगर हम बहुत मिसयूज करेंगे उसके बाद भी देयर विल बी अ टाइम व्हेन अर्थ विल रीजनरेट, और फिर चैलेंजेस आएंगे, नई तरह के चैलेंजेस आएंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू टेक चैलेंजेस, टू लर्न। These are the lessons which we have learned from this coronavirus. And these were the, as discussed, challenges and opportunities at our disposal. That's all from my side. Any questions from you people? Updating and upgrading is the key. Very good, Divyansh. We have to upgrade and we have to update ourselves, right? Okay, any questions? Okay, so I hope that you all will help yourself in building your healthy routine, in keeping yourself fit, as well as keeping yourself updated and studying regularly. Very important. पढ़ाई regularly करनी है. And learning curve is the best platform you have. जो आप एक social skills पे lag कर रहे हैं, जो हम co-curricular activities पे lag कर रहे हैं, this is the platform for you people where you can overcome it. इकट्ठे आप होते हैं सब यहाँ, virtually you are together. You can have your debates, you can have topics with discussions, you can have with your tutors. They will guide you more and more. And thank you so much, Learning Curve, for for bringing me as a speaker for today. And Learning Curve, I think you students should also thank them that they are working on motivating, keeping you motivated, so that you can optimize your strengths to the fullest. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for giving us opportunity. I think it was a very interactive session, and all the students, those who have, they have get answered to all their doubts. And thanks a lot for telling us that we have to take care of our health, because in our day-to-day life we tends to forget our health and give priority to the money oriented. And also thanks a lot for guiding our kids to take care of nature, to take care of themselves. So self care is a point that you always emphasized throughout the discussion. Thanks a lot, ma'am. uh, Thank, thank you so on the much, and all the best, dear students. Best wishes for your studies, for your examinations. Thank you.